Assalamu alaikum student. I hope you all are fine. And today we are going to discuss about the level 4. Okay, computer book of level 4, which the name of this book is the Hello World Kids. Okay, before that we are using the e-skills book, which we are not using right now. We are using a new book. The name of this book is the Hello World Kids. Okay, this information is basically for the all student. They are I'm saying again and again to these students, to those students, beta please you must have to bring the new book, but they must have to again and again वो पुराने ही बुक लाए जा रहे हैं. So beta the name of the book is the Hello World Kids. The book name of the book is written over here. Okay, so you can see that. After that, what we have to do, basically in this book we have two friends. In unit number 1 we have two friends, Mr. Rado and Mr. Greeno. Mr. Greeno and Mr. Rado, these are the very important character of this unit number 1. Okay, Mr. Rado is always asking the question and Mr. Greeno is always giving the answer of these question. Okay, and they are the main characters of unit number 1. Okay, so you have to know that. ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे. ठीक है, अच्छा. After that what we have to do in the lesson number 1, in the lesson number 1 is a very easy lesson. Here is nothing to discuss over here except that why we are using the MS Excel Hello worksheet. Okay, what is mean by the worksheet, why they are using this worksheet use करें the word you are using the worksheet और the spreadsheet, both words are same. ठीक है, दोनों चीज़ें आपके पास सेम ही होंगी. Okay, the learning objectives, or we can say that the objective of the lesson is the lecture is that after getting this lecture you will be able to define why we are using the MS Excel and how we can store the data in the MS Excel, how we can manage the data in the MS Excel, and what is the environment of the environment, or we can say that what is the interface of the MS Excel. Okay, so here we are going to discuss about the, I have told you about the two friends which you can see over here. यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं. I am using a highlighter over here. हाइलाइटर मैं एक यूज़ करना चाहूँगी यहाँ पर. यस, दिस वन. दिस इज़ मिस्टर राडो. ठीक है, अभी मैंने आपको इनका इंट्रोडक्शन बताया था. मिस्टर राडो इज़ ऑलवेज कन्फ्यूज्ड एंड मिस्टर राडो इज़ ऑलवेज आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर ग्रीनो because both are friends. Mr. Rado is asking a question and Mr. Greeno is giving the answer of these questions. So Mr. Rado is asking to Mr. Greeno, I have a lot of data. I am having a hard time finding what I need. Can you help me? Mr. Rado, again I am repeating the same question. Mr. Rado is asking to Mr. Greeno, I have a lot of data. I am having a hard time finding what I need. Can you help me? Mr. Greeno listened the question and replied to Mr. Rado and said, why you are not using the Excel? Okay, Mr. Rado is saying that what is Excel? Excel क्या होता है? What is Excel? Okay, Excel is completely a new thing for Mr. Rado. Mr. Rado don't know about that. Okay, so Mr. Greeno is saying that Excel is basically a program which is using to store or to which is used to store and manage and manipulate the data. Okay, basically it is used to store and manage the data. ठीक है, simple as that. Or these are the some facts which has been given over here. I don't want to read over here. ठीक है, मैं read नहीं करना चाहूँगी because we have already discussed in the class. But if you want to read it, in fact in 1987 at age 31, Microsoft co-founder Bill Gates became the youngest billionaire ever at the time. Okay, so what we have to do right now? Okay,
Mr. Rado is again asking the same question. Mr. Rado is know about that Excel is a program where we can save our data, we can store our data, we can manage the data, we can manipulate the data, but how we can open the MS Excel? Mr. Greeno is telling about these steps. Mr. Greeno आप कुछ steps बता रहे हैं. First you have to click on the start menu, then you have to go to the search, and then after you have to click on the Excel, and then you need a blank workbook, and then you have to click on the blank workbook where you can write your data. अब वो कह रहे हैं एक्सेल फाइल इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट. इसको हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं और इसको समटाइम हम क्या कहते हैं, वर्कशीट भी कहते हैं. बोथ थिंग्स विच वी आर यूजिंग फॉर द सेम थिंग. ठीक है, एक ही चीज़ के लिए वी आर यूजिंग द टू नेम्स, स्प्रेडशीट और द वर्कशीट. बोथ आर दी सेम थिंग्स. देयर इज़ नो नीड टू कन्फ्यूज अबाउट दैट. दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज द स्प्रेडशीट. इसको हम स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं और वर्कशीट भी कह सकते हैं. देयर इज नथिंग न्यू फॉर इट. अब इसमें कोई नई चीज़ तो है नहीं. आफ्टर दैट वी हैव दे आर इंट्रोड्यूसिंग व्हाट इज सेल. मिस्टर रेडो इज अगेन आस्किंग अ क्वेश्चन कि सेल क्या होता है. मिस्टर ग्रीनो इज सेइंग दैट cell is a rectangular area that represents the intersection between a column and a row. It is where data is entered into the spreadsheet. Basically, what is cell? A cell is the area where we have to enter our data. ठीक है, simple words we can say that it's a rectangular area where we can enter our data, where we have to enter our data. ठीक है, जहाँ हम अपना डेटा एंटर करते हैं, where we have enter the data. After that, the name box shows the active cell. नेम बॉक्स जो है वो आपको क्या शो करवा रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर वर्किंग ओवर हेयर, so it shows the name box. ठीक है, the formula bar contains the content of the active cell. This is a cell. अब यहाँ पर लिखा हुआ this is a cell. ये क्या है, सेल है. यानी एक जो है इसको हम पूरे को क्या कह रहे हैं, सेल कह रहे हैं. बेसिकली एक्सेल इज कंसिस्ट ऑन कॉलम एंड रॉज. एक्सेल जो है वो कंसिस्ट किस पर करता है, इट कंसिस्ट ऑन ओनली कॉलम एंड रॉज. कॉलम आपके पास इस तरह से हैं, जिन्हें हम इस तरह से अगर मैं लाइन एक ड्रॉ करूँ, स्ट्रेट लाइन, दिस इज नोन एज अ कॉलम. और अगर मैं इसको इस तरीके से इसको मूव करूँ, देन दिस इज नोन एज द रॉ. ये क्या हो जाएगी, रॉ हो जाएगी. जस्ट लाइक द सेम केस इज हेयर. बी को अगर मैं कंप्लीटली सिलेक्ट करूँ इन अ स्ट्रेट वे, देन इट इज़ नोन एज द कॉलम एंड दिस इज नोन एज द रॉ. और इसको क्या कहते हैं, रॉ कहते हैं. आप देखते हैं, कॉलम आपके पास ये है, कॉलम आपके पास नंबर्स में है. ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास वो कह रहे हैं अब ट्रू है या फॉल्स है, ये आपने बताना है. 6D इज अ करेक्ट सेल नेम. 6D जो है वो करेक्ट सेल नेम है. 6D. डेफिनेटली इट इज़ फॉल्स. अभी हम जब पीछे एक्सरसाइज सॉल्व करके आए थे तो हमने इसे किया था डिटेल में. ठीक है, स्प्रेडशीट इज़ द नेम ऑफ द एक्सेल फाइल. स्प्रेडशीट किसका नेम है, एक्सेल फाइल का नेम है आपके पास. Okay, after that what we have to do, we have filling the blanks. A cell is a rectangle. मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ. A cell is a rectangle area where we have to enter our data and it is the intersection between the column and a row. ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है, सेल है. The formula bar contains the content of the active cell. जहाँ हम काम कर रहे होते हैं वो हमारे क्या होता है, this is known as the active cell. A spreadsheet is the name of an Excel file.
स्प्रेडशीट जो है वो नेम है एक्सेल फाइल का, इट्स ट्रू, या आपके पास एक्सेल फाइल का ही है, ठीक है। सो दिस इज ए सिंपल एक्सरसाइज विच वी हैव डन। दिस इज़ द रिवीजन। आई होप कि ये सब आप रिवाइज करेंगे इसी तरह फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, to get the better marks in the examination, to get the better result, to get the better and better grade in the examination as well. So best of luck to all of you, and Allah Hafiz. Thank you so much.